from the chapter Current Electricity. Let us start. First important question which we have to discuss is of 4 marks, and that is uh, describe how a potentiometer is used to compare the EMF of two cells by the combination method. So you have to measure EMF of two cells. Comparing EMF of two cells using which method? Using individual cell method by the combination method. Okay, using combination method. When we say combination method, matlab dear students, we are going to use both the cells. Uh, both the cells. We are going to use both the cells at a time. Matlab we are not using them separately. We can also call this as sum and difference method. Let's understand this. Now, dear students, first of all is the construction principle. So, what is the principle? To compare EMF of two cells using principle of potentiometer. What is the principle of potentiometer, dear students? That is, the potential drop is directly proportional to the length of the wire. That is, V by L is nothing but what? Constant. That is the simplest principle. Okay. Now let us do the construction. So dear student, this is 4 meter long potentiometer wire. Okay, which is wire A and B, correct? And it is connected to what? It is connected to a standard cell. It is connected to having some internal resistance, connected to a key, and then it is connected to a rheostat. RH means rheostat, K means key, small r matlab internal resistance of standard cell, and E means your standard cell or auxiliary cell or primary cell. ये जो हमने लगाया है, these are what? These are plates. You can say copper plates. Okay. So first of all, we have to do the labeling of the diagram tissue. So what we'll do is we'll label the diagram first. Okay. E is my primary cell, or I can call it as standard cell. R is internal resistance of my cell. K is your key. RH is your rheostat. This is the primary circuit I have drawn, dear students. अभी तक मैं secondary circuit पे आया नहीं हूँ. AB मतलब potentiometer, length of potentiometer wire. Now, dear student, this is the primary circuit. You want to do what? You have to use two cells and you have to compare the EMF. So for that, I am connecting two cells.
Okay, sir, what is this diagram? Dear students, I have drawn this key ka system. Okay, this is key A, this is B, this is C, and this is D. Okay, now this is your first cell whose EMF is, let us say, E1. This is your second cell whose EMF is E2. This is your सेकेंडरी सर्किट. प्राइमरी सर्किट हो गया, अब ये सेकेंडरी सर्किट हम लोग कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us start with understanding this circuit. So पोटेंशियोमीटर में we have two cells E1 and E2. हम लोग उनका एक रैंडम EF ले लेते हैं. बेटा, डू यू हैव द आइडिया हाउ दिस वर्क, कि मैं आपको एकदम बेसिक समझाऊं? आपको मालूम है पोटेंशियोमीटर? Yes, sir, we know it. मालूम है ना आपको? Yes. लेटेस्ट से आपके पास दो सेल्स हैं, एक है E1 और एक E2 है. और आपका जो EMF E1 का है मैंने ले लिया 3 वोल्ट, E2 का ले लिया 0.5 वोल्ट. और आपने जो बैटरी कनेक्ट किया डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी है? 5 वोल्ट की. तो ये पॉइंट का कहीं पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल कहीं 0 वोल्ट होगा. बीच में यहाँ पे कितना होगा बेटा? 4 वोल्ट. यहाँ पे कहीं कितना होगा? 3 वोल्ट. यहाँ पे कहीं कितना होगा? 2 वोल्ट. और यहाँ पे कहीं कितना होगा? 1 वोल्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. बेटा, जब मैं ये की ए और सी को क्लोज करूंगा, मैं कौन सी की कर रहा हूँ बेटा? ये जो मैंने बनाया ना, ABCD इज विच व्हाट? इस कम्यूटेटर की. G means what, dear students? Galvanometer. Galvanometer. And K means what? J means what? Sliding contact Joker. key, or you can also call it as jockey. करेक्ट है. अभी डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ना कंसेप्ट आपको वो रखने के लिए मैं इसको नंबर्स के साथ कर रहा हूँ. आपने जो सेल लिया प्राइमरी, उसका सेल कितना है? 4 वोल्ट. 5 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल प्लस वाला हाई रहेगा, तो इधर 5 दे दिया, और इधर नीचे वाले का 0 दे दिया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस. इट्स वेरी सिंपल, बट नंबर से बहुत आसान हो जाता है ये. सो व्हाट यू आर डूइंग इज, व्हेन की A and C are closed and keys B and D are open. ठीक है. Now, dear students, if this is happening, so the current will flow from where? For that, I am redrawing the diagram, dear students. Do you understand the diagram, dear students? सबको समझा? Current A और C से गया. Can you see that? From A, then it goes through E1, Yes. then ऊपर वाला पार्ट, फिर E2, फिर ऐसा घूमा, ऐसा 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 करके फिर वो गया. तो पहले वो किसके टर्मिनल पे आया? प्लस पॉजिटिव वाले के E1 पे आया, फिर उसका माइनस नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ऐसे घूम के आया. तो कहना है से डियर स्टूडेंट्स, द कॉम्बिनेशन इज समवॉट लाइक दिस. पॉजिटिव ऑफ E1 माइनस नेगेटिव ऑफ E1 प्लस पॉजिटिव ऑफ E2 माइनस नेगेटिव ऑफ E2. बेटा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इज व्हाट? असिस्ट. Assist. मतलब the cells are assisting each other, and if the cells are assisting each other, dear students, then what happens is, then I can simply write, let me move this sliding contact key wala part niche, this. Then I can simply write, what I can write, that E1 plus E2. अच्छा, E1 plus E2 आ जाएगा. बेटा, what is E1 plus E2? If you add them together, it will become how much? 3.5 ना? Yes. You will take your jockey and you will touch it at this point. So if you will touch at this point, it will be 4. तो बैलेंस नहीं होगा. यहाँ पे लेके जाओगे तो कितना होगा बेटा? मे बी 3.8 हो जाए. यहाँ पे लेके जाओगे तो मे बी 3.9 हो जाए. कोई तो एक पॉइंट आएगी ना ये स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको 3.5 मिल जाए. तो जब आपको Yes. 3.5 मिल जाएगा, तो आपका जॉकी यहाँ पे कहीं आने वाला है. उस लेंथ को हम लोग क्या बोल देंगे? L1. तो वील से व्हेन
The galvanometer shows zero deflection. The EMF of two cells E1 plus E2, ब्रैकेट में नंबर्स भी लिख देता हूं उनका, कितना 3.5 वोल्ट, balances against some length, balances against what, balances against length L1. तो अगर लेंथ L1 के बैलेंस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वी विल राइट E1 plus E2 is directly proportional to L1, therefore E1 plus E2 is equal to KL1. सबको समझा? Yes. Okay, next up we can go with difference वाला part. Now when keys B and D are closed and A and C are open, understand the diagram? समझा बच्चा लोग? पहले करंट जब ये जंक्शन पे आया तो करंट Yes. ए से पास नहीं हुआ, क्योंकि ए सर क्या था, ए अपना ओपन था, तो करंट डी से गया, फिर डी से जाने के बाद वो ये जंक्शन पे जब आया तो करंट कहाँ सोचा जाने को, सी में जाने को सोचा नहीं, बट सी तो ओपन था, तो फिर किधर गया, नीचे गया, फिर ऐसा ऊपर गया, फिर वो किधर आया, इधर आया, तो ए से जाएगा बी से जाएगा, बी क्लोज है तो बी से चला गया, फिर ऐसा हुआ. दिस इज हाउ द करंट का डायरेक्शन इज. अंडरस्टूड द पॉइंट? Yes. नाउ इफ यू लुक क्लोजली डियर स्टूडेंट्स, उसका ट्रेसिंग के हिसाब से पहले वो प्लस पे आया, फिर माइनस पे आया, फिर माइनस पे आया, फिर प्लस पे आया, घूम के ऐसा पूरा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, so it is E1 E2. Dear student, this condition is called as what? Cells oppose each other, correct है? और अगर अपोज करेंगे तो मेरा नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? इट विल बी 3 माइनस 0.5, कितना हो जाएगा? 2.5. 2 point. I'll take my galvanometer, I'll go at some point, और कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा डियर स्टूडेंट जहाँ पे मेरा galvanometer जो है वो उसको बैलेंस करेगा. ओके, सो आई टेक द जॉकी, आई जस्ट टेक द जॉकी समवेयर समवेयर समवेयर, यहाँ कहीं सर 2.5 होगा, है ना? तो उसको बैलेंस करेगा, तो आई राइट द सेम स्टेटमेंट. व्हेन द galvanometer shows zero deflection, the EMF of two cells E1 minus E2 balances. और इज E1 माइनस E2 का वैल्यू भी हमने निकाल के रखा था डियर स्टूडेंट्स, 2.5 वोल्ट, balances against length L2. Therefore E1 minus E2 is directly proportional to L2. Therefore E1 minus E2 is equal to KL2. Equation 1 is done, equation 2 is done. Let us divide the two equations. If I divide, E1 plus E2 upon E1 minus E2 will be equal to L1 upon L2. Okay, this is one formula. And if I cross multiply and rearrange it or do component or dividend, I'll get E1 by plus E2. E1 upon E2 will be L1 plus L2 upon L1 minus L2. Simple idea, students. This is the result, dear students, which we can get. Okay. Are we clear with this much, बच्चा लोग? Yes. Perfect. अच्छा, सबको ये क्लियर है ना कि मैंने ये 5 से 4 क्यों लिया, 3 क्यों लिया? बिकॉज अलोंग द लेंथ पोटेंशियल क्या होता है? ड्रॉप होता है. ठीक है.
तो ये पहला था डियर स्टूडेंट्स।